So, first of all, welcome back to the channel. Today we are going to have another topic, which is simultaneous linear equations. In the first video, in the introductory video, we discussed about it. हमने पहली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि पावर 1 होती है, जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपके पास 1 होती है। साइमल्टेनियसली मींस मोर देन वन इक्वेशन, एक से ज्यादा इक्वेशंस आप एट अ टाइम सॉल्व कर रहे होते हैं, एट वन टाइम सॉल्विंग मोर देन वन इक्वेशन एट वन टाइम, एंड द वेरिएबल ऑफ द इक्वेशंस इज वन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लीनियर इक्वेशंस। अब इसे सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व simultaneous linear equations? We'll talk about it, and inshallah we'll learn all the available methods. There are basically two methods सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, and another method name is elimination method. So today we are going to start with substitution first. We'll do it, and after that we'll be doing elimination. So let's start with substitution method. The question has been given to you. Like the question number 1 is solve 2x plus 3y equals 18, and the another equation is 5x plus 3y equals 28. So you have been given two equations, like equation number 1 and equation number 2. This is part A. Let's call it part A. It is a general equation. So you have to solve it using substitution method. Like itself, substitution से आपको पता लग रहा है कि you have to substitute, means plug in the values. You have to put the values from one equation to another, means equation number 2. Let's call this equation as first equation, and this equation as second equation. Let's start our solution as always. So from equation number 1, we will just find the value of any one variable. किसी एक variable की value हम इसमें से find कर लेंगे. Let's find the value of x from the first one. So it is 2x plus 3y equals 18. So it would be x equals to 2x equals to 18 minus 3y, and x would be equals to 18 minus 3y whole divided by 2. Let's call it equation number A. Now, from equation 2, let's put this value, put x in equation number 2. You have to keep in mind, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपने पहली इक्वेशन से कोई वैल्यू सपोज की है, इट मींस यू आर गोइंग टू पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, आप उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अगर सेकंड इक्वेशन से कोई वैल्यू निकाली है तो उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करते हैं, 5 x is 18 minus 3y whole divided by 2 plus 3y equals to 28. So what will we do here? It would be 5 into 18.
518 times is how much? 518 times is 90. It would be 90. There is a plus sign. Plus into minus is minus. Then 5 into 3 is 15. Y as it is, whole divided by 2. Then plus 3y equals 28. So we'll just, solve it here. So for this, we need and let me draw a line here. Yes, that is. So it is 90 minus 15. Y plus 3y equals to 28. As you know, जैसे आपको पता है 90 minus 15 is divided by 2, but this 3y is divided by 1. So you cannot add or subtract until your denominators are not same. आपके denominators जो नीचे वाली values होती हैं, जब तक ये same नहीं होते तो आप add या subtract दो values को, दो fractions को नहीं कर सकते. It is a fraction divisible by 2. This one is a fraction divisible by 1. It means its denominator not same. इनके denominator same नहीं है. आप इसे कैसे same कर सकते हैं? This one is 1 and this is 2. You can make this 2 as well by multiplying and dividing upside and lower side. So it would be now, like it would become 90 minus 15y plus 3 into 2 is 6y whole divided by 2 equals 28. Let me remove this line first. How are you going to do this? Like it would be now. We'll solve it ahead. It would be 90 minus 15y plus 6y is minus into plus is minus. So 15 minus 6 is 9. And there is a negative sign with a greater value. बड़ी value के साथ आपके पास negative sign है. So you are going to put negative sign here. And minus y whole divided by 2 equals to 28. It is going to be 90 minus 9y. 28 multiplied by 2 is 56. So it would be 90 minus 9y equals 56. And it would be 90. Right side पे ये 56 है. On the left side it will become minus 56. On the left side it is minus 99y. On the right side ये आपके पास 9y हो जाएगा. 90 minus 56 is 34 is 9y and y equals to 34 divided by 9. So this one is the value of y. You will put that value again as you have found it. हमने equation 1 में से, let's recall this, equation 1 हमने ली थी. equation 1 में से हमने x की वैल्यू फाइंड की थी. उस x की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 से हमें y की वैल्यू मिल गई. इस y की वैल्यू को अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. बिकॉज अभी हमारे पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, यानी x की वैल्यू में y मौजूद है. अभी हम y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे एंड देयर विल बी x वैल्यू एज वेल. सो x इक्वल्स टू 18 minus 3 times what is y? 34 divided by 9 and this whole divided by 2. So it is equals to x equals to 18 minus 3 1 times and 3 3 times. It is going to be 18 minus 34 divided by 3 whole divided by 2. So again, as the same way, we cannot add or subtract. हम 18 और 34 को ना add कर सकते नहीं subtract कर सकते हैं because it is a fraction 34 divided by 3 and this 18 when there is nothing in denominator there is 1. So 18 divided by 1. So we have to make both the denominators same. हमें दोनों denominators same बनाने होंगे. This one is 3. We can make it 3 by multiplying in the numerator and denominator. 3 into 18 times is 54 minus 34. It is 3 and 3. So these are same 3. And there is another 2. So how would you do that? कैसे करेंगे हम इससे? Like, can we write this divisible by 2 like this?
For example, this is 54 minus 34. Sorry, 54 minus 34 is 54 minus 34 is 20. It is 20 divided by 3. And this is 2. It is dividing by whole side. ये आपके पास इस पूरे 54 minus 34 divided by 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे इस तरह एक स्टेप में लिख देंगे. Is x equals to. In the next step, आपको पता है कि जो डिवाइड होता है हमारे पास, ये डिवाइड में 2 के अपॉन में आपके पास 1 है. When there is division, you will convert this division in multiplication. So it would be reciprocal. जो माइनस से ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपनी प्लेसेस चेंज कर देंगे. So it would be 1 over 2. And as you know, 2 1 times and 2 10 times. So it is x is equals to 10 divided by 2. So this is the value for x. So for this equation, we have x equals to 10 over 3 and y equals to 34 over 9. अब आपको पता कैसे चलेगा कि जी आपने जो सोल्यूशन किया है ये ठीक है या नहीं. एग्जाम में कभी आपसे मिस्टेक हो जाती है. इफ यू हैव टाइम टू रीचेक, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अपना सोल्यूशन रीचेक कर सकते हैं, सो आई वुड से यू मस्ट गो फॉर वेरिफिकेशन. आपने वेरिफिकेशन लाजमी करनी चाहिए आपको, ताकि आपको पता लगे जो आपने इतना लंबा क्वेश्चन किया है, इफ देयर इज एनी मिस्टेक, एक प्लस या माइनस साइन की मिस्टेक होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. सो काइंडली गो थ्रू दिस क्वेश्चन, काइंडली वेरिफिकेशन किया करें. विल डू इट लाइक ओके. How to do the verification? You can get any one equation from the original equation. आप कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं ओरिजिनली, यानी इक्वेशन नंबर 1 लेना चाहें या इक्वेशन नंबर 2 लेना चाहें. दिस इज वेरिफिकेशन. What you will do, it is 2x plus 3y equals to 18. तो वेरिफिकेशन में होता क्या है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है. अगर आप x और y की वैल्यूज पुट करते हैं तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, then it means your solution is correct. Getting me? It would be 2. And what is the value of x? X has the value 10 over 3. So 10 over 3 plus 3. And what is y? Y is 34 by 9. 34 divided by 9, which is equals to 18. So 2 into 10 is 20. And there is 3 in the division, so we'll write it as plus 3 1 times. And 3 how many times? 3 3 times. So it is 34 divided by 3 equals to 18. As you know, both the denominators are same. दोनों denominators same है, हम एक बार लिख देंगे इसे. So 20 plus 34 equals to 18. 20 plus 34 is 54. So 54 divided by 3. 3 1 times 3. 3 1 times 3. 2 is remaining. 3 18 times. It means 18 is equals to 18. So your solution is verified. I hope आपको समझ में आया होगा किस तरह करने. Let me recall the steps. अगर आपको steps चाहिए, if you need step wise, I can also write steps for you. What is going to be the first step? The first step is naming the equation. Naming of equations. Okay. What should be a second step? That find any one variable in terms of another. Okay, let me rewrite it. Find any one variable from equation 1 or 2. It's up to you. 1 and put that in 2 and put that in equation number 2. Then it is the first step.
It is the second step. Now, what is the third step? That put the value you get from equation 2 into equation 1. And the last step, it is optional. It is optional. It is up to you if you want to do this. Verify. Verify your solution. Verify your solution. I hope you would understand. If there is any kind of ambiguity, अगर यहाँ पे आपको कोई परेशानी है, you can drop your comments. I will, make sure that as soon as possible, I will get back to you. Okay? Thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz.